भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तस्मै नमः परम कारण कारणाय दीप्तोज्ज्वलज्वलित पिंगललोचनाय नागेन्द्रहार कृतकुंडलभूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णुवरदाय नमः शिवाय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रनकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुण नवकंच लोचन कंज मुखवन कंज पन गंजारण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छविनव नीर नीरज सुंदर पथ पीत मानहु तरित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निबंधन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दो
श्री राम श्री राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजना मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कल दल रंजना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न करो। देवन आनी करी बिनती तब चार दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बस जीरी जात महाप्रभु पंत निहारो। शोकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री राम। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपीश यवन उचारो। जीवत न बची हो हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तत सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास गए सिय को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सो आगे सोते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद्य सुषेण सा
तब गिरी द्रोण सुबीर उपारो आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो। को नहीं जानत है जग में कभी संगत मोचन नाम तिहारो संगत मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे शिर धारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संगत बारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही पूजी वही विधि सोबत देवु सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए पर देवन की तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। नाम तिहारो नाम तिहारो नाम तिहारो नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगोर वज्र देह दानो दलं। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। बोले बजरंगबली भगवान की जय। अरुणा सिंह भजन भूमिका सिंह
काहे सुतल बाहो, काहे सुतल बाहो, मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। काहे सुतल बाहो, काहे सुतल बाहो, मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। सब पंछी जागे जागे धरती माता, हो जागे धरती माता। राम भजन बिन सुना जीवन, काहे जन्म गवाता, हो काहे जन्म गवाता। मिट जाए रे, मिट जाए दुख रे साहे पाहे बहुत राम का सुतल बाहो, सुतल बाहो, मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। राम है हमरे तन मन जीवन, राम है हमरे दाता, हो राम है हमरे दाता। फिर संगी वो राम रमैया, और सभी छित जाता, और सभी छित जाता। वो है स्वामी रे, वो है स्वामी जगत रचैया, जिनके सभी गुलाम का सुतल बाहो, काहे सुतल बाहो, मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। काहे सुतल बाहो, काहे सुतल बाहो, मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। मनवा जपने सीताराम 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 राम राम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। Jai Sitaram everyone, in the temple and online. I want to welcome all of you to our Tuesday evening Hanumanji Chalisa and Sundarkand Hanuman Katha, Ram Katha. On behalf of Bhavani Shankar Mandir, welcome to all of you. And we hope that wherever you are, and for the few of us in the temple here too, everyone is happy and comfortable. We'll be doing a few chaupais this evening from Sundarkand. These are things that are just refreshers for everybody, but in a hot summer day, refresher is good, so it keeps us fresh and awake. So let's chant a few chaupais and then we'll talk about Hanumanji, his ability to comfort and to bring happiness to even those who are in deep distress and pain. Bole Pawan Sutta Hanuman ki Jai. Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram. 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 कही कपि हृदय धीर धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमीरु राम सेवक सुखदाता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उर आनहु रघुपति प्रभुताई,
पुरान रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कतराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निश्चर निकट पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जाने, जो रघुबीर होती सुधि पाई। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम बाण रवि आये जानकी, राम बाण रवि उये जानकी, कम वरूथ कह जातु धान की। राम सिया राम जय जय राम। 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 कहा कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुखदाता. Compose yourself. You know, this is a very popular part of the Sundarkand. This is when Mother Sita had met Hanumanji, and she became very, very sad, because sometimes, you know, when you meet somebody, you see, when they talk a story, you hear, you remember someone you've lost or someone you're away from, and you start to cry. Mother Sita was away from Bhagwan Ram. And when Hanumanji brought message that he is Ram Doot Baladham ki, Jai 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 Shri Ram ki. When he brought message that he is a messenger of Ram, he's a servant of Ram, Mata Sita became very sad and she starts to cry. She starts to remember Bhagwan Ram. And then when she starts to cry and remember the Lord, as any devout servant or son or friend would do, they would comfort you. They would tell you things. Sometimes it's not okay, but they will tell you that it is okay. And so what happened? Hanumanji says, Kapi kaha kapi hriday dheer dharu mata. The Tulsidas ji choose to use the word here, kaha kapi. Kapi means the monkey. Kaha means what the monkey said, or Hanumanji. What Hanumanji said, hriday dheer dharu mata. Here is Tulsidas ji describing Hanumanji, you know, as a monkey, and saying that a monkey spoke to a human being. And what did he say? Dheer dharu mata. Compose yourself, O mother. Compose yourself, O mother. This is the respect Hanumanji had for Mata Sita. Mother Sita is not the birth mother of Hanumanji, we all know that. But we know as well that it does not require you to give birth to someone to be a mother. And you do not have to take birth from someone to be the child of that person. And that is why a mother, whether you've brought forth a child or not, that respect is given to you at all times. Hanumanji Bhagwan, when he saw Mother Sita crying, he says, compose yourself, Mata. Hanumanji ne kaha ki, hey Mata, hriday mein dhair dharan karo, aur sevako ko sukhi karne walo Shri Ram ji ka sumiran kare. He said, fix your thoughts on Bhagwan Ram,
कि दुख में सुमिरन सब कहे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब कहे, कि सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन कहे को, दुख का है कोई। दुख में सुमिरन सब कहे. Just like Mother Kunti had asked Bhagavan Shri Krishna to bless her with sorrows and worries. Vipada. Bless me with sorrows and worries, Shri Krishna. Bhagavan says, why? She says that because in most cases, when we are worried and when we are sorrowful, then we pray to Bhagavan the most. Mother Sita heard these words from Hanumanji. Hanumanji says, Mata, fix your mind on Bhagwan Ram. Fix your thoughts on Bhagwan Ram. Sumiro Ram Sevak Sukadata. Because who is Ram Bhagwan? He's the delight of his devotees. Reflect upon Bhagwan Ram. Reflect on the glory of Bhagwan Ram. And as you listen to my words, shake off, O Ma, shake off all your faint-heartedness. When we listen to the Katha of Bhagwan, and this is how important Katha is, no matter how much, what our day was like, no matter how our day was like, whenever we take a moment and we went to Satsangh, whether we were little children or even now, you take a few moments and you listen to something, a Satsangh, bhajan, a kirtan, no matter how much terrifying your day was, that moment that you listen to something good, what happened? You immediately start to let go. You let go of all your weaknesses. Fix your mind on Ram. Nisachar nikat patangasam Raghupati bana krusanu Janan hriday dheer dharu Jare nisachar jaan. If I should ask you a question, if you take a pen and a paper and you have to write down the number of problems we have in life, the number of problems we have in life, some will have a long list, some will have a list. It doesn't matter. Everyone, every single one of us have some kind of challenge we're going through in life. Whatever it is a challenge. And we are bound to have it. Saints have challenges. The Devatas have challenges. The Devis have challenges. Leaders have challenges. Beggars have challenges. People who want something have challenges. People who have nothing have challenges. People who have everything have challenges. There is no short of problems in our life. Itni problems hai. So many problems we have that we cannot count them. Hanumanji says, here is how we deal with our problems. How do you deal with it? Nisachara nityakat patanga sam raghupati bana krisan. राक्षसों के समूह पतंगों के समान है और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है. He said that the myriads of challenges and issues that we have in life, they are countless. We cannot even count them. Lekin Raghupati Ban Krisan. Just like there are numberless problems that we have in life, the Lord's Ban, Raghupati Ban, the Lord's bow and his arrow are like so fiery and powerful, Janani Hriday Dheer Dharu, that it burns away all these problems and impurities from our lives. Burns them away. O Mata, when you think of Bhagavan and his appearance with his arrow and bow, his powerful bow, his ban, Krisan, is so powerful that it will burn away all our impediments. And for that reason, we always have Namanam. We always think of God, and there should be a point where Naman, we have Naman, where we have no mind at all. We're just lost in the focus in the Lord.
So that is a little key. How do we deal with problems? How do we deal with problems? One of the way is to think about the appearance and the beauty of the Lord, because His presence alone is so fiery. It burns away all impurities. Few more chaupais. Jo रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रवि हुए जानकी, तुम तमवरूत कह जातु धान की. If Ram Bhagwan only knew your pain that you're going through today, then he would not have made delay. He would have been here already if he knew the pain that you are in today. He would be here today. Let me ask you, don't you think that Bhagwan Ram knows all the pain that Mother Janki is in? He knew everything. He knows what is happening because Tu Antaryami, bhajan was just sung, Sabka Swami. तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम. तू अंतर्यामी, सबका स्वामी. If Bhagwan Ram knew the pain and the suffering Mother Sita was enduring, and why did he send Hanumanji to solve his problem, to find out where she was, what she's doing? He's Antaryami, he knows everything. If he knew what she was enduring, the pain she was enduring, why didn't he just build his army and go right away and fight the war? Right? The Lord's Leela, Bhagwan has created this Srishti, this entire creation he has made. The world has to take its course. Our lives have to take its course. I was talking to a doctor a few days ago. And I said, Dr. G, tell me, long ago we never had so many diseases and sicknesses and problems. लेकिन आज इतनी परेशान है, इतनी दुख है, so many sorrows, so many problems, so many diseases that we are having. What is happening? What is triggering all of this? And his response was, as a doctor, that, we should not worry about these things. Sickness will happen, healing will happen if it has to happen. But human beings must be a little bit more closer to their Bhagavan. Human beings must be a little more close to God. Whether it's Jesus or whoever you believe in, or Hanumanji, you must be a little closer to God. Because when we are closer to Bhagwan, we will understand that everything is taking its course in life. Sita Ma she had to pay her dues. Her struggle had to take its course in life. Ram Bhagwan had to cry when Lakshmana was shot. That had to take its course in life. Separation from Ram Bhagwan had to occur because that had to take its course in life. Bhagwan Ram had to be sentenced to the forest because that is part of life. Sorrows help us to understand the beauty of pleasure. Sickness help us to understand the value of health. Right? There are many, many people, unless they become sick, they will ever appreciate life. Whether that's the case or not, but many times, if I get a cough, once in a while, or a cold, then I realize the value of my voice to sing, because I can't sing for that period of time. If you have a fever, then you realize the value of your health, especially when you're not mobile. The point is, if you have missed lunch or food one day, then you realize the value of those who prepare your food. Life cannot be a smooth sailing
thing at all. Nothing is like this. The oceans are not like that. Sometimes they are smooth, sometimes they are rough. The environment cannot be like that. Look at what is happening right now with the wildfires of many places in Canada and in California, right? Now there is a air deficiency warning for us here. The quality of the air is not that good because of the, what do you think of? No, air deficiency. Air quality. Because if air deficiency, you can't breathe. The air quality. The air quality is not that good now because there is all these wildfires happening. If we were breathing good air all the time, we would never have, the appreciation for what it is. The point is here, nothing happens in life all good all the time. If that were the case, we would never know how to handle challenges. So the point here, as I was reading the Ramayana a few days ago, Bhagwan has created the good and Bhagwan has created the bad as well. Hanumanji says, if Ram Bhagwan only knew, he would have made delay. How can the darkness of the demon host linger on when Ram's shaft, Janki, rise like the sun? This very moment, mother, I would have taken you to him myself. Question is, why didn't Hanumanji just lift? Why didn't he just lift Mata Janki and fly away with her back to Ram Bhagwan? Well, let me ask you questions. How many of us in life follow instructions? Whether you're a child, you're an employee, or whoever you are, you're a student, how many people follow instructions? Right? Why didn't Hanumanji do so? Hanumanji ne कहा था कि हे माता, आपको यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, हे माता, कुछ दिन और धैर्य धरो, श्री रामचंद्र जी बानरों के साथ यहाँ आवेंगे. I would have taken you away, mother, but Bhagwan Ram did not instruct me to take you with him, to take you with me. He follows instruction because Ram Dut Atulit Baladhama Anjani Putra Pavana Sutanama. He is the messenger of Bhagwan Ram, and if you're the messenger of the Lord, you have to carry out his instructions. Don't bother thinking that Hanumanji accumulated all this bal and buddhi just like that. Discipline, discipline, and discipline. His sincerity, his love and devotion for Ram Bhagwan enabled him to be like that. And what happened? Sita, of course, Sita Ma, when she heard about the very beautiful, comforting words of Hanumanji, Mata Sita, she took up courage. तब जाकर सीताओं के मन में भरोसा हुआ, हनुमान जी ने फिर वही छोटा रूप धारण कर लिया. Mata Sita, she took courage, and then when she took courage and she was happy again, Hanumanji, of course, resumed his small form, his regular form to comfort her. Our message this evening is that Hanumanji, don't think of him as just having big muscles and fetching mountains and all that. No, no, no. Hanumanji brings comfort to people's lives. Are you one like that who brings comfort to people's lives? We should always do things every single day to the best of our ability. Now, we don't know to solve every problem, neither do we have the time to do that. But to the best of our ability, we must bring a little bit comfort to people at least in their lives. Today, we want to thank you for being with us. We'll have a couple of Hanumanji Chalisas now. These Hanumanji Chalisas. The first one is dedicated to, they're from Alu King, of course, by Ji Kamo. And the first one is dedicated to his Auntie Sabita or Ruth. And they're saying that may Hanumanji bless you all in multiple ways.
enjoy your special day for the superstar from Alu King team. So happy birthday to Auntie Ruth. May Bhagwan Ji bless you in abundance from the Alu King team. Sri Guru Charan Saroj Raja Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Bimal Jaso Jodayak Phal Char Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Muhi Harahu Kalesha Vikar जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केश हो हाथ भद्र और ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे समित जीवन पर पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाहि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न डरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार बात कर कोई जो कही बंदी महासुख हो जो यह पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महावीर ओ की जय नाथ हृदय महावीरा की जय नाथ हृदय महावीरा पावन तनय संकट
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय में बसहूँ सुरभूप सिया भज रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। The next Hanumanji Chalisa as well comes from Alu King from Kamo, wishing his mother a happy birthday in heaven. And many years ago his mother passed away, and we want to extend Bhagwan's blessings to the entire family, and hope and pray that Mataji's Atma is with Paramatma. And so we dedicate this Hanumanji Chalisa to her in heaven, coming from Kamo and Sabita and the entire family. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Vimal Jasu Jodayak Phalchari Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी है। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिनु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ भद्र और ध्वजा विराजे काने मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति की भी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिया भरत संभाले सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजभर दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पर जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल्दी लागे गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे तासु अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सुबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे
अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बोलो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, जो कही बंदी महासुख होई। जो यह पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साधी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महादेवा। की जय नाथ हृदय महादेवा, की जय नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसऊं सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय। Anaya and Arjun will sing now. Kamo, of course, dedicates this. On June 21st, I'll be reading Katha at Triveni Mandir, Brampton Triveni Mandir. And Kamo, Alu King, will be sponsoring the food that evening, the bhojan at the temple. So all of you are invited there to come and to be in Satsangh on June 21st at Triveni Mandir, at which I'll be officiating. And I will sing bhajan now. मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन परायब तेरी द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन परायब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर
to sing now? Himalaya sing? Is that what? Sure. जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भात भात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। भात भात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। हो नैया के बलिहारे, हो नैया के बलिहारे। जपो में तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाए लेकर मनवा साँझ सवेरे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। Tomorrow evening, the youth group is coming here to the temple in the yard to continue the cutting of the lawn and so on. So anybody wants to come, please come tomorrow evening, 6:30, to help with the lawn. And also, Saturday coming is our walkathon. All of you are invited to come and join in the walkathon on Saturday. And then on the 24th of this month, we have our 24-hour Havan as well. Please sign up online at bhanishankarmandir.com/Havan. This evening, I want to thank as well our Shrota, my dear sister Nirmala, and Auntie for being here. They did puja,
and sat and listened to Hanumanji Chalisa. It's a very quiet and nice Tuesday evening. May Bhagwan bless them both and their family. Yani kani chapavani janmantar kritani tani sarvani nashyantu pralakshanam pade pade. आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाते। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पताए, लंका जार सिया सुधराए। लंका सकोप समुद्र सिकाए, जात पवन सुत बार लाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं माम देव देव। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम्रगगन्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 हरि ओम। प्रेम से बोलो गणपति भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सियाभज रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगदम्बिका माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। शंभो सत्य सनातन धर्म की। सब कोई जय जय सीताराम, जय सीताराम एवरीवन। Please have a blessed and blissful evening, and see you soon. Vin, you all right? Next week. Arjun, name me one thing today that you did that you're proud of. You plays what? Oh, second. You're very proud of that? Very good. You should be.